becomes slowed down. It is 75 now. As it grows higher, the temperature rise will be slower. Now it is almost touching 80. I am putting that above the immersion heater so that it goes up quickly. And just for you, the temperature. Now it has crossed 80. $85. Now it has become very slow. 85. The rise is not that much. I should show it to the camera. Just all of you can see it. I'm just looking at it, whether it is steady or not. Go to the camera. Almost 90, I don't. But I cannot see, but you see, same thing. How much is now? How much is now? How much is the temperature? How much can you see the temperature? That's the answer not visible. It has crossed 90. It has crossed 90. Can you see it? How much? 100? No, it cannot be 100. I can see it, it is 93. It is 93. I think it will remain at 93. 93. 92.5 or something like that. Just okay, between 92 and 93. Now it has become steady. It will not rise. And lay, this temperature is 90. Obviously, lay is higher than that. Okay, so I stop it. Now we are convinced that the temperature boiling point of water at Kargil is 93 degrees. It is a very rough experiment. If you do very accurate experiment, maybe you will find it will be different, but it cannot be plus minus 0.5. So this is the first experiment to show that to your children, you must say that the boiling point of water depends on the height. And why height? The next part I am going to do it. So at Kargil it is 93, at Leh it is, I am taking 93. Okay, 92.5 is not very important for me. Okay. But these thermometers are very cheap. You can afford to buy several. Now it will go down very fast. It will go down very fast. Now it is 60. It is going down, and I am just putting it inside it because they are very likely to break very quickly. Therefore, I have lost many thermometers because while coming, nowadays they do not give any privilege for fragile. The airlines have removed those things. There is nothing fragile for them. Everything is hard.
So my things always get wasted. Doesn't matter. Now next experiment, I need some heavy things. That means, say, little bit of पत्थर चाहिए, stones. लेकिन इधर जो भी है, I am going to try this, and also I need a plastic bag. Plastic bag. Yeah. I am taking out my. थोड़ा problem हो रहा है internet में. Looking for the project. This is my plastic bag. It is always better that I have a fresh syringe, new syringe. But I have sent a list that have this. Not one. Oh, this is very hot outside the sun. Okay, fine. This is good. It was quite high, maybe 50 degree or 60 degree. Now you see, syringe is a very important experimental tool for us. Okay, this part is open. There is a lot of holes are there, and I shall talk about it later on. That we have a lot of confusion about pressure and force. Everywhere in all books, they say that pressure is acting upward direction, pressure is acting downward direction. Pressure is a scalar quantity. It cannot act like that. But I will have a detailed discussion because I want to give the stage to Dr. Gulati. But if you just completely close it, there is little air. I used to ask the people who are in the workshop that how much air is here. Of course, it is very small. Then you hold it like this, and then you pull it. So you see, air pressure is acting through this, and you know force is pressure into area. So whatever is the area, you multiply the area with the atmospheric pressure. That is the force which is applying there. It may seem that this is very small. Now I need a girder. There must be some girder. Yeah. Here is the girder. This is the simplest way of doing some physical experiment. No balance, nothing. I am using this because it doesn't almost no weight. So I put it here, or both of them I put it here, and I make a twist here. Then this girder I can put like this. And what I'm going to do is that I push it up and then put this weight here. It may be, it appears that in the small syringe I am putting such a big stone. I put all the four. They have brought four. I put all the four. To save time. Because we are in 3 days, I shall try to make as much as experiment possible. This is another stone. Quite heavy, 4 stones, and quite hot also. Now I hold it and pull it. And let's see whether it has any effect on this. Okay. As I said, I need new syringe. So let me try with a larger syringe which I have. Unless the syringe is new, It may have also leaked because of. yeah. It may not. No, just it has come out. Okay.
That means the syringe has gone bad. But more bigger syringe I use, more weight will be required. For those who have seen earlier, you will probably remember. No, this is better. But I don't know whether I shall be able to supply the weight it needs to hold it. I don't know. তুমি আমার যাবে না না ছাড় ছাড় দেখছি এখানে যা আছে তাই দিয়ে করবো sorry for speaking in Bengali now see I pull it down and it goes up. That means this weight it can take. Okay, let me put some more weight. This is heavy. I put this. And then again, my limit is where the mark is given. I'm not sure whether it has really balanced. What I do, I reduce some weight from here. And give one bar for this is a box for magnetism experiment. So I'm having trouble to separate. Let me see whether you probably is there. So I think I can put this also because it is still going up. Or I can only place the larger block. Still going up. So I put everything. No, it has not stopped. That time it has stopped, but May keep some more faster. What's the board concentrated? so this is amazing. Okay. This syringe, I am pulling up to the mark where it is written 20. That means 20 milliliter or 20 cc. Okay, now it is balanced. No, it is still going up. Balanced work. The bag is with it. Oh, it is, yeah. I can say that it is balanced. So how much weight this has taken? Hey.
Just put it. Or I can just put it here. Let's not. Come in. But still it is not correct. Why? Because this syringe is old syringe. It has developed some friction. So now we have some work. So 2 kg force is pulling and atmospheric force is pulling it up. Let me measure the length. Because this is a 20 cc syringe up to this point. From here to here it is 20 cc. So I put this scale. It is giving about 6 centimeter. 6 centimeter means length is 6, volume is 20. How much is the cross section? Volume is 20. Cylinder's length is 6 centimeter. Then it is 20 divided by 6. That means somewhere 3.3. Okay, 3.3. 3. Let us take 3. So 3 square centimeter is taking a weight of 2 kg. The error is very 30% because atmospheric pressure is 1 kg per square centimeter. How do you know that? You can easily calculate. In book it is written that atmospheric pressure is 76 centimeter. But now I am coming to the other point. What is that atmospheric pressure? It is at the sea level at 45 degree latitude, and now we are standing at KARGIL. And I have measured the pressure at Leh, it was 60. And here we are getting how much? 20 divided by 3, like 20 divided by 6, 3.3. That means it is less by 3.3. And rather 33% less than the normal atmospheric pressure. In KARGIL, it is 40% less. In Leh, it is 40% less, and in KARGIL, it is 33%. So that's see the whole thing. We learn through that altitude changes, the pressure and all. We can do, demonstrate that exactly. No books will tell you how much in KARGIL, how much in Leh. That's the difference. We said the altitude makes a difference. Such a simple experiment, hands-on, will give that, and actually you can make a plot. It is very amazing. Very amazing in the sense, I am thinking that it might be some error. Deliver it. What I'm doing to confuse. But actually, the result is so much less because the atmospheric pressure here is about 70%. 70% of the actual. That means 700 gram weight per square centimeter. I am always using the weight factor. That means 700 gram weight is the force and 700 gram is the mass. So based on my learning, I'm just learning it with you. I have not studied this way. So already 2 simple experiments I just observed. One was the boiling point measurement, another atmospheric pressure understanding and measurement with very simple tool. These are very and the correlation of boiling point with the atmospheric pressure and all these things that we go on teaching in science that we all know. The boiling point changes and pressure. We are actually experiencing and experimenting and learning rather than learning just what is written in the text. So if I have to apply that science in KARGIL, I have to use this data and information. Right?
Now, another very simple experiment. That is, you may see I am doing something. Everything what I do, remember that it is some experiment I am trying to perform. Now I put this one on the top of it. I can put this also. Then I put this paper here. And there must be a match somewhere here. Yeah, I got it. It should be horizontal. So I put it on the box itself. I'm just putting fire. This is the thing. And now I am just putting it here. That's a tea bag, right? That's A tea bag. We have taken out the tea and flattened it, and you have seen that with the help of a taste tube, I make it cylindrical. It may not be correct. Because even a okay, the experiment is successful. I thought it will not be successful. Why this has happened? Can anybody explain it? Very simple. I don't do anything very difficult because these experiments are meant for class 6, 7, 8. They should know what is our atmospheric pressure here. They should know what is the temperature where the water is boiling, why the mommy is always taking a pressure cooker to boil something. All these answers they will ask. So somebody must tell me what has happened, why it has done so. Can anybody give the reason? Very simple. Those who have no, okay, it's okay. Because I am behind the these things I'm using for many years. That's why they are not looking good. But this bottle I collected from here, they looks good. I hope you remember the experiment. I haven't done it. Oh. No, we did it in lay, but here in short version we didn't do it. I forget. Actually, so many No, that was places a I short do it, I cannot remember. This is also something for class 7. Not very difficult. Now, I have not got the answer about the tea bag. Why the tea bag gone out? So actually, let me tell you, to save time and to save your embarrassment. You are all teachers. You are not giving the answer. If something burns, what happens? A candle is burning. You put your hand. What will happen? Huh? Your hand Become hot. Your hand will burn, isn't it? Why? You are not touching the flame. Even then your hand will burn. Why? Because they are surrounding air to walk with them. Because that's it. हिंदी में बोलिए पर बाद में कोशिश कीजिए थोड़ा इंग्लिश में जाने के लिए. I can speak in English. No Like you people, you don't know Hindi. We don't I know know much. I know much English. मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ. So we can speak in English. Yeah, but then in English. But not plainly as you do. Okay, doesn't matter. हम लोग इंग्लिश नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है. हमारा इंग्लिश थोड़ा खराब होगा. इसमें कोई दोष नहीं है. जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाता है तो उन लोग बोलता है जिन लोग इंग्लिश स्पीकिंग है थोड़ा धीरे धीरे बताना क्योंकि रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंग्लिश स्पीकिंग. They cannot understand. So whatever you say, I am happy. But I just want you get it acquainted. Now when air gets heated, what will happen? The air becomes lighter. That means density is less. So it will go up. Now the nature adverse vacuum. That means when something goes up, something will come to take the position.
And this tea bag is a very special type of tea bag because tea from inside, after soaking, it goes outside. It is porous. So when it is burning both inside and outside. So cold air from the sides is coming and it is holding it and taking it. Why not immediately afterwards? First you have to create the this is called convection current. Conduction, convection and radiation. So this is the convection current. So when the convection current is created, then only it will go off. But before that, you have seen that with the paste I have done it. What I have done, I have taken some water and moist my hand and make the tissue, the tea bag moist. Why? Because these places are very dry. If I put the tea bag and get the fire, it will burn very quickly. And if it burns very quickly, it will not go. And if I put more water, then it will not burn at all. It will gila ho jayega. Na gila hoga, it jalega nahi. So, to do an experiment, you have to keep your mind the several things. That it should not, if there is air, there is no problem. This is a colder place, so pankha nahi hai, AC nahi hai. Okay, this is fine for me because for that experiment is successful. But I thought when we start burning, it was burning very furiously. So I say maybe experiment will fail. That means before forming the convection current, if it burns out, then it will not happen. But to my fortune, and you are also fortunate, you can see that because I have only one feedback left, but I can from here I can get. Now another just one thing. One thing we talk about science is observation. From the very childhood, we should, even from the very primary, pre-primary level, we should train their mind to observe things around. So even you see how Sir has done the experiment, one experiment, and simple experiment, and through that he has not only explained the phenomena of that particular air density changes and stuff, he has also given a layers of knowledge and information. Moisten with water so that the burning will be controlled. If you change the different, how it will happen. So all these things from one single experiment, you can have many observation and curiosity to explain why. You may not get all the answer, but if we can inculcate that philosophy or that way of learning science is all first observation and question, not what is written in the book and just answering that. Learning science, because nobody will in life in science is going to ask as a question. Science will come in your life as a real life problem. Exam ke liye to theek hai. There will be a set questions we can do and that. But that science learning is not going to help anybody who has learned science. Science learning would be only useful if we can absorb what the science teaching was. So observation, curiosity to ask why, and try to explain or create more experiment to learn it. That is all science is about. All the science, the history of science, if you read, it's whether apple was falling on Newton's head or whatever, people asking, they have the observation, then they start asking questions. More and more interpretation came, more and more science developed. So we have to inculcate. हम लोग उसका मदद करना चाहिए जैसे बच्चे के सोच वैसा क्वेश्चन आंसर तो आप करा लेंगे हमको बताइए जो हायर सेकेंडरी भी साइंस पढ़ के निकले हैं वो तो सब कुछ पढ़ के गया एक्चुअली हायर सेकेंडरी साइंस में जितना सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म न्यूटन लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या ना क्या है अगर वो बच्चे वो सब सीखा है वो अप्लाई कर पाए तो मतलब बहुत कुछ हो गया हम लोग सब तो क्वेश्चन आंसर करा दिया लेकिन शायद 90% बच्चा कभी उसका पूरा साइंस का महसूस नहीं हुआ उसका नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो हमारे जो मेथड है फाउंडेशनल साइंस एंड मैथ जैसे हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी चल रहा है ऊपर वही तरीका एक्टिविटी बेस्ड
सीखो No. देखो जानो चलो। This is also another very simple experiment. I have two same volume water bottle and have same amount of water. This is a smaller hole. This is also same size hole, so that air can go in. What I shall do, I shall just turn it over. And you have to tell me which bottle will be emptied first. कौन से बॉटल पहले खाली हो जाएगा? ये आप सोच लीजिए, आपको दिमाग में सोच लीजिए कौन बॉटल। मैं जानता हूँ आप जो बोलेंगे वो रॉन्ग बोलेंगे। जो भी दिल में आ रहा है उसको उल्टा बोलो। You are not supposed to give answer, sir. Anyway, So हो सकता as है I said, it's very important. Whatever coming in your mind, if you say the opposite, then you will be correct. Now see, I'm just turning it over. Right. Right, right. You are right. You thought of it. आपको आंसर मैं देता हूँ। आप लोग सोचा इसमें एक छोटा सा ट्यूब है, बहुत नजदीक है, लेवल से तो जल्दी निकल जाएगा। लेकिन आप लोग सोचा नहीं, जब मैं ऊपर कर दिया, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया H2G, तो इसका लंबा जितना होगा यहाँ से उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, तो जल्दी जल्दी वो निकल जाएगा। So you see, so simple experiment. What do you need? Nothing. और बच्चे कभी भूलेगा नहीं। उसको किताब में पढ़ाओ, आप भी एग्जाम पास भी हो जाएगा। 2 दिन जाके पूछो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, वो भूल चुके हैं। Even कभी नहीं। then do not know H2G, they will remember H2G. Even they have not learned it, they will remember, oh, height, low density of water, G is constant, acceleration due to gravity. So rho G निकाल दो तो सिर्फ height के ऊपर डिपेंड करता है। वो करेगा क्या, नेक्स्ट डे उसका पेरेंट का पास जाके इतना बड़ा पाइप लगा देगा, पेरेंट खोल कर बोलो तो क्या होगा, पेरेंट तो जरूर गलत बोलेगा। और एक चीज देखिए डॉक्टर साहब, कैसे ये तो देखा है, एक्सप्लेन भी कर दिया, और कितना इनफॉर्मली वो सिलेबस में जो है उसको कनेक्ट कर दिया, है ना। वो थ्योरी नहीं लिखा बोर्ड में, हजार थ्योरी नहीं लिखा, वो एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन के पर ये पूछा, दिखाया, कनेक्ट कर दिया और बोल दिया देखो वो पूरा थ्योरी में क्या है, जाके देखो, सब कनेक्ट कर दिया सिलेबस के साथ। जो कभी कभी लोग बोलते हैं ना ऐसा करेगा तो सिलेबस कैसे खत्म होगा, ऐसा हम अलग करेंगे तो सिलेबस नहीं खत्म होगा। इससे सिलेबस तो अचानक खत्म भी हो जाएगा, आप खत्म कभी हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर जो खाली वो किताब पढ़ के वो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 100% पाया, उसके इसके बारे में एक्सपेरिमेंट के एप्लीकेशन बारे में क्वेश्चन पूछोगे 0 मिलेगा उसको। अगर यही तरफ से आप सिखाएं, हम सिखाएं, थ्योरी के साथ जोड़ दिया बाद में, तो दैट दे विल बी एबल टू, कैसे भी आप क्वेश्चन करो इसके बारे में, he or she will be able to answer. Now I am handovering to Dr. Gulati. मेरे गुरु हैं, तो मेरा सौभाग्य कि इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सर ने बहुत सिंपल बात में बहुत बड़ी बात बताया है हमको। तो थोड़ा सा सिंपल चीज भी जानना है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज भी जानना है। ये तो सर ने दिखाया, सबको यूज किया हमने मेजर करने के लिए, और आपने अपने स्कूल में लैब में तो सबने देखा है इसको, सबने देखा है, वेरी गुड। तो मेरे को ये बताइए कि सबसे कम टेम्परेचर ये क्या मेजर कर सकता है? 0। जीरो कितने लोग बोलते हैं 0 को मेजर कर सकता है?
हाथ खड़ा करें ऐसे, अरे -10 कितने बोलते हैं? -10 तो 20% -10 बोलते हैं, 10% 0 बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ध्यान नहीं है, हमने ध्यान से देखा नहीं था, इंस्ट्रूमेंट देखा था, उसकी रीडिंग्स को ध्यान से देखा नहीं था। और सबसे ज्यादा क्या मेजर कर सकता है ये? बॉइलिंग पॉइंट तो 110 कितने बोलते हैं? 110 अभी तो स्क्रीन में देखा था, वेरी गुड। फिर भी आधे ही लोग बोल रहे हैं, आधे भी नहीं बोल रहे हैं, 40%। तो इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में आज बोला आपको, वी ऑल नीड टू बी वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। किसी चीज को देखा है, उसके साथ उसको डीपली देखना। अच्छा, इसका ये बताएंगे कि यूनिट क्या है, यूनिट साइज क्या है, कितना डिग्री तक मेजर कर सकता है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? आधा डिग्री, 1 डिग्री, 0.1 डिग्री, कितना? 0.1 डिग्री। कितने लोग बोलते हैं 0.1 डिग्री? 0.1 डिग्री। 1 डिग्री कितने बोलते हैं? 2 डिग्री। हाँ, तो वापस से इसका सही आंसर 1 डिग्री है। तो मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि बहुत बारीक बारीक चीज को देखने का जरूरत है। सेब तो बस जब से इंसान है, क्या इंसान नहीं भी है तब भी तो सब चीजें ग्रेविटी से नीचे गिरती है ना। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन को उसको फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ा। उसके पहले क्या किसी के सर पे सेब नहीं गिरा था क्या? गिरा होगा ना। हमारे यहाँ तो किसी के सर पे नारियल गिरा था, वो तो रहा नहीं। तो वो क्या ढूंढना? सेब गिरता तो आप लोग ढूंढ सकते हैं, आपके यहाँ पे सेब होता है। और यहाँ पर तो वो खुमानी भी है, खुमानी गिरने से तो और भी मजा आता है। हम लोगों ने कल रात खाया। तो जो भी डिस्कवरी है उसके लिए बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन का जरूरत रहता है। सर ने आपके साथ अभी डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट, राइट, और बोला कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमारे एक्सपेरिमेंट में 93 आया है। ठीक, आप मुझे ये बताइए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पर तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, राइट। यहां पर 93 डिग्री पे हो जाता है, गोवा में 100 डिग्री पे जाके होता है सपोज, राइट। तो वहां पर ज्यादा टेम्परेचर पे क्यों होता है? कौन रोकता है उसको वेपर में बनने से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब यहां पर एक ग्लास पानी है, ये इधर पानी है, ऊपर एयर है। तो एयर क्या इमेजिन करो, नीचे कुछ स्टूडेंट हैं, ऊपर कुछ टीचर हैं। स्टूडेंट बंक मरना चाहता है, वो जाना चाहता है बाहर, तो टीचर आसपास के सारे उसको रोकते हैं, इधर नहीं, इधर नहीं, वापस बल नीचे। एक पॉइंट आएगा जब टीचर रोक नहीं पा रहे तो वो उधर जाएगा। अगर ऊपर टीचर ज्यादा आ जाए, उस दिन बहुत सारा टीचर, सब जगह का टीचर एक ही स्कूल में भेज दिया, अब टीचर का पॉपुलेशन ऊपर ज्यादा हो गया ज्यादा, अब बच्चे के लिए बंक मारना मुश्किल हो गया। तो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, बाहर के लोग रोकने वालों की ताकत ज्यादा हो गई, तो उसको बंक मार सकता नहीं है। और अगर कोई है ही नहीं, थोड़े लोग हैं रोकने वाले, तो फिर क्या है? हम तो अपनी मर्जी से भागेंगे। तो आप सियाचिन में जाएंगे, वहां पर तो 50 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएगा, राइट। क्यों बोलते हैं कि ले में जाओ तो वहां पे जाके हमको ज्यादा पानी पीना पड़ता है ना, प्यास ज्यादा लगता है, नहीं पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, हम भी ट्रांसपायर करते हैं, खूब सारा हमारा वाटर से बॉडी लूज होता है, बॉडी से वाटर लूज होता है। तो ये बस वो कहानी है, बैलेंस किसका है, रोकने वाले कितने हैं, राइट। अब मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम ये सब बदलाव को देख सकते हैं, राइट। तो मैं वो निकालता हूं एक मीटर, तो हमको दिखाएगा ये
तो ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एक डिवाइस है, कितनों ने देखा है पहले, ये देखा है क्या? हाँ, तो इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या मालूम? कुछ भी नहीं मालूम। तो अब हम इसको बोलते हैं लव मीटर। तुम्हारे दिल में कितना प्यार है इसको ये मेजर कर सकता है। कौन टेस्ट करना चाहता है? हाँ, दिल में है प्यार, किसी के लिए भी हो सकता है, अपने देश के लिए भी हो सकता है, खुदा के लिए हो सकता है। तो दिल का मुझे ये नहीं पता चलेगा किसका है, किसके लिए है, कितना है ये बताऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम समझते हैं, पूरा साइंस समझते हैं। यहाँ पर एक लिक्विड है, कलरफुल रेड सा लिक्विड है। ये जो लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस है, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसका शेप को देखिए क्या है। तो यहाँ पे एक बल्ब है, इसमें एक लिक्विड है, इस लिक्विड का नाम है डाइक्लोरोमीथेन। तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट 39 डिग्री से, और इसमें एक ट्यूब है जो नीचे डिप कर रहा है इस लिक्विड के अंदर, और ये ऊपर एक स्पाइरल है, लंबा रास्ता बनाया, ऊपर जाके बल्ब है, उसको हमने बंद कर दिया। तो इसका मतलब इस समय अगर ये सारा का सारा लिक्विड नीचे आ जाए तो पूरा हवा रहे ऊपर। तो यहाँ पे देखें, पूरा लिक्विड जो है, मान लेते हैं सारा नीचे आ गया है, तो यहाँ पर ऊपर में कुछ प्रेशर है, कुछ वेपर के पार्टिकल्स हैं, कुछ वेपर इसका डाइक्लोरोमीथेन का कुछ वेपर्स है जो दिख नहीं रहा है हम। अब मैं क्या करता हूं, इसको अपने हाथ में इसको ऐसे पकड़ लेता हूं है। अब मैं पकड़ रहा हूं तो आप ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, और मैं फास्ट कर सकता हूं। ये थोड़ा पानी गर्म है तो थोड़ा इसी में डाल देता हूं। ये देखो बड़ा तेजी से जा रहा है, इसको बहुत प्यार है पानी को। अब ये देखिए सारा का सारा लिक्विड ये ऊपर के बल्ब में जाता जा रहा है, जा रहा है। तो ऊपर जाने के लिए तो मोटर लगता है। यहाँ पे कौन मोटर है भाई? हाँ, ये क्या मोटर है? ये मोटर समझ आएगा तो हमको बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा लिक्विड अब हीट की वजह से नीचे वाला खाली हो गया ना, और ये सारा का सारा ऊपर गया, ये नीचे वाला खाली हो गया, ऊपर वाला भर गया। तो हुआ क्या कि जब मैंने इसको हीट दिया तो इसका एनर्जी बढ़ाया, लिक्विड का एनर्जी बढ़ाया, तो वो वेपराइज होगा, वो उसका वेपर कहां जाएगा? ये ऊपर की जगह में, इस जगह में जाएगा। यहां पर जब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो प्रेशर बनाएंगे ना, वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो वह क्या रहेगा? प्रेशर नीचे वाले लिक्विड को दबाएगा। जब नीचे वाले लिक्विड को दबाएगा, उसके पास तो जगह है नहीं नीचे जाने की, तो वो कहां जाएगा? इस ट्यूब से वो ऊपर जाएगा। जब ऊपर का प्रेशर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स के लिए ऊपर आना मुश्किल हो जाता है। ऊपर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाए तो नीचे के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एयर में आना मुश्किल हो जाता है, तो उनको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ता है। इधर से तो बंक नहीं कर सकते हैं, तो वो कहां गया? नीचे गया और ट्यूब से रिलीज किया। तो सर आपने कहा हीट एनर्जी इज द पंप, बिल्कुल सच बात है। ऊपर में अगर हम इसको कर देंगे गर्म तो वेपर्स इसको सारे लिक्विड को नीचे पुश करें। तो बॉइलिंग पॉइंट वो एक बैलेंस है बिटवीन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ऊपर जो दिखते नहीं है, एंड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड दैट इज विजिबल टू अस। इसमें रंग डाल दिया गया, होता नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है डाइक्लोरोमीथेन, इसमें थोड़ा कलर डाला ताकि थोड़ा दूर से विजिबल हो जाए, राइट? तो इसलिए समझा आपने, ऊपर प्रेशर कम होगा तो भागना आसान है, ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो भागना मुश्किल है। और वो जो बैलेंस है जहां बॉइलिंग होता है, बोलता है ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, राइट? तो वहां पे इक्वल हो जाता है, सही बात है। तो आइए हम बहुत बेसिक बात से एक स्टार्ट करते हैं, और वो होता है फिजिक्स में, साइंस में, जिसको बोलते हैं हम फोर्स ना। तो क्या
फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, कौन बताना चाहेगा? पुश और पुल। पुश और पुल। तो पुश है तो ऐसे तो बता नहीं पाएंगे दूर से, तो पुश का मतलब क्या हो गया कि क्रेजी किया है, पुश है ना, और मतलब ऐसा। तो दो ही ढंग से फोर्स लगाया जा सकता है, या तो हम किसी को पुश कर सकते हैं या हम पुल कर सकते हैं। पर अब सर मैंने आपको कितने फोर्स से पुश किया था, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। वेरी गुड। तो आप बता सकते हैं कि मैंने आपको कितने न्यूटन, न्यूटन हम न्यूटन तो नाम है किसी का, तो जैसे आपका नाम क्या है सर? रामा, गुलाम, मेहदी। तो अगर मेहदी होते उस टाइम पर तो हम बोलते कितने मेहदी का फोर्स लगाया है, कितने मेहदी का फोर्स लगाया है। मेहदी, लेकिन अब मेहदी बोलता है यार मेरे को क्यों बोल रहे हो, मैं तो एक था। मेहदी कहां से आया? तो मेहदी कहां से आई? तो एक मेहदी है। तो हमको फोर्स के बारे में जब बात करना है तो हमको पता होना चाहिए 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? 1 न्यूटन कितना होता है, एक फॉर्मूला सिखाते हैं ना, F = मास इनटू एक्सेलरेशन और ma, और हम इसी से सिखाते हैं सारा का सारा कहानी। हाई तो क्लास में चलते हैं वापस, F = ma, और हम क्या चाहते हैं, फोर्स कितना, 1 न्यूटन। मास कितना होना चाहिए, 1 kg। एक्सेलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। तो क्या डेफिनेशन होता है 1 न्यूटन का? 1 केजी मीटर पर सेकंड। हम बोलते हैं 1 न्यूटन। तो हम ऐसे ही आप सिखाते हैं, हम भी सिखाते हैं अपने बच्चों को। 1 न्यूटन उतना फोर्स होता है जितना 1 किलो मास के ऊपर लगे, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एग्जाम में हम लिखेंगे तो हमको मिलेंगे फुल मार्क्स, है ना। ये लिखने भी मार्क्स मिलेंगे, इसके अलावा कुछ लिखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। F इज, हाँ, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ये जो जब हम SI यूनिट्स यूज करते हैं प्रोपोर्शनल में, तो आप ऐसे लिखते हैं ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो K, और SI यूनिट्स के अंदर जो K है उसका वैल्यू डिफाइन इस ढंग से किया गया कि उसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसलिए हम F = डायरेक्टली ma भी लिख सकते हैं। सही बात। तो अगर मेरा फोर्स तो 1 न्यूटन है लेकिन मास मैंने आधा किलो लिया, अब एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर, तभी तो बना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सब हम करेंगे ना तो हमारे को मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिल तो जाएगा, लेकिन हम उस फोर्स का कुछ कर नहीं पाएंगे। आजकल तो कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है ना, लेकिन मन तो करता है तो पंगा करे हमसे तो थोड़ा टैक्स लगाई दे। अब गवर्नमेंट को कुछ रूल तो बनाना पड़ेगा कि इतना फोर्स जो है, अगर किसी ने मेहदी साहब को लगाया, मेहदी साहब इतना फोर्स लगा दिया, अब मेरे को आप लोग एप्लीकेशन लिखना है कि सर ने मेरे पे फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स था, तो आप क्या कहिएगा कितना न्यूटन था वो, क्योंकि आपका मास तो है 60 किलो 50 किलो और फोर्स लगाया मैंने, तो टीचर पूछेगा कितना एक्सेलरेशन हुआ था तुम्हारा, हाँ कितना हुआ आपका एक्सेलरेशन, आप तो जगह से हिले, थोड़ा था ऐसे ऐसे, हाँ कितना सर, मैं आपको क्या लगता है कितना लगाया, ये मैं लगाया था आपको, आप 1 न्यूटन फोर्स लगाया है। और तो 1 न्यूटन को जानना जरूरी है। जैसे हमने कहा हमारे थर्मोमीटर में हमको जानना जरूरी है कि वो सबसे कम कितना मेजर करता है, सबसे ज्यादा कितना करता है, उसका यूनिट क्या है, क्योंकि फोर्स का यूनिट है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का दबाव होता है, ठीक है। तो आइए जो आपको समझ आता है 1 न्यूटन, हमारे पास एक स्केल है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको दबाइए ताकि 1 न्यूटन इसके ऊपर रिकॉर्ड हो, ठीक है।
तो आइए मैम दबाइए इसको। 1 न्यूटन जितना कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना आया, कितना रीडिंग आ रहा है, कितना ग्राम, 1.8 ग्राम। तो 1.8 केजी, 1.8 ये बोलती है कि 1 न्यूटन इतना होता है जितना 1.8 केजी। तो आपको कुछ देखते हैं, आपका हाथ भारी कुछ होता है, बच्चे बोलते हैं टीचर का हाथ बहुत भारी, कितना भारी है, कितना कितना आ रहा है 1.2। तो कौन सी मैडम का हाथ भारी है, इससे बच्चे को डर ज्यादा लगेगा, मैडम से लगेगा ना। यस, ऑलराइट, वेरी गुड। तो खाना खाना है आपको, भूख लग गया, लेकिन तो सर का तो देखो मसल है, ये सही तो है। ये है 2.5 किलो का हाथ, इसी पे पड़ता है वो उठता नहीं, तो 1 न्यूटन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना हमारा, क्योंकि मैकेनिक्स तो ऑलमोस्ट आधा तो मैकेनिक्स होता है, हमने अगर फोर्स को ना जाने तो हम कुछ ना कंप्लेन कैसे लिखेंगे। मेहदी साहब कितना फोर्स लगाया था आपको हमने, 5 न्यूटन तक तो माफ है, तो माफी वाला था कि ना माफी वाला। तो इसको आप थोड़ा सोचें, खाना खाएं, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। अरे हमारे होते हुए नींद आएगा तो फिर हम कहाँ चलेंगे? क्या बात।